Once again, wish you a very good morning. A very good morning. Yes, I can see the flags. तिरंगा लहरा रहा है and इतना बड़ा जन सैलाब and this is St. Paul's. We have been given the protocol, the time schedule, and we are going to follow the time schedule very strictly. So the arrival of the chief guest will be at 10 o'clock. Just a few moments, as you can see the clock right in front of you. The chief guest will arrive sharp at 10 o'clock. Yes, and you all know the purpose of this gathering. I hope you know the purpose of this gathering. Okay, we have had the practice yesterday and it was all about patriotic song singing. Singing of the patriotic songs by the students of all the schools in Rajasthan. Desh Bhakti Geet Gayan Karikram, and it is a state level program, and today we are going to make a history. We are making a history, and yet another milestone we are going to achieve today. You can put the flags little down. Do not wave the flags right now. Time and again I'll be instructing. You can do that. Yes, the students at the back, teachers kindly see that they spread out a little, especially the students of class 9th, 10th and 12th class students, teachers kindly see that they spread out a little. And dear students, as we follow the time schedule, it's at 10 o'clock right in front of you, and the chief guest is arriving in our midst. The chief guest of today's program, patriotic song singing program, Desh Bhakti Geet Gayan Karikram. The chief guest of today is none other than the chairman, CDESU, Catholic Diocesan Education Society of Udaipur. The chairman, His Excellency, Right Reverend Dr. Bhupalpura Ganawar, the chief guest has arrived in our midst. A huge round of applause, students, for the chief guest.
Principal, to welcome the Chief Guest, His Excellency Right Reverend Dr. Devaprasad Ganaba, by giving him the bouquet. A hearty welcome, sir, in our midst. I request Reverend Father Manager to welcome our Chief Guest, His Excellency Right Reverend Dr. Devaprasad Ganaba, by giving him the cap Azadi ka Amrit Mahotsav, a symbolic of our freedom, our completion of 75 years Azadi ka Amrit Mahotsav. And the Chief Guest is now wearing the cap Azadi ka Amrit Mahotsav. I request SL Jain sir to please come up quickly on the stage. SL Jain sir, respected SL Jain sir, to please adorn our Chief Guest with a strong Jai Hind, Jai Bharat, Azadi ka Amrit Mahotsav. We welcome His Excellency Right Reverend Dr. Devaprasad Ganaba, Chairman CVESU, in our midst. After having welcomed our Chief Guest in our midst, let us have the lighting of the lamp ceremony. For this, may I once again request our Chief Guest, Right Reverend Dr. Devaprasad Ganaba, to please come forward for the lighting of the lamp. I request Reverend Father Manager, Reverend Father Principal, I request Reverend Father Vanatu to please come forward for the lighting of the lamp. I request Sister Rani to please come forward for lighting of the lamp. I also request respected Madhu Kushwaha ma'am and Bawarji to please come forward for the lighting of the lamp. My dear students, Azadi ka Amrit Mahotsav, we are celebrating
this Independence Day, 75th anniversary of our independence, and we celebrate the glorious history, achievements and culture of India. And it is a proud moment for every Indian. आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। राजस्थान के 1 करोड़ विद्यार्थी एक स्वर में, एक साथ, एक समान, एक लय और एक ताल में 6 विभिन्न देशभक्ति गीतों का गायन करेंगे। एंड thereby we are going to create a world record at the same time all over Rajasthan. 1 लाख स्कूल के विद्यार्थी, 1 करोड़ विद्यार्थी एक साथ, एक समय पे, एक लय और एक ताल में देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। Now for this, may I invite on stage the choir group of the school to lead us into singing the patriotic songs. The choir group students may please come up on the stage. You can welcome these students with a huge round of applause. Yes, the choir group of the school, the students have taken their positions and we will start the patriotic song, singing of the patriotic songs exactly at 10:15. Dear students, the most precious thing that you can think of is freedom. And freedom has not come so easily to us. 200 years of slavery and then the freedom on the 15th of August 1947. But the struggle stories, we do not know so much about it because we have not lived that era. We are living now in the 21st century. But when we got our independence, when we struggled for the independence, it was not easy. There were struggles, lot of struggles. And let me tell you, those people who fought and struggled for the freedom that we are enjoying today are not in our midst. But today we can become their voice. Such a huge number here. आपके सामने 2 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे हर लहू का कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं, पर यह वादा है तुझसे मेरा। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। मेरे बाद मरने वालों का सैलाब आएगा। और आज ये सैलाब यहां खड़ा है देश की आवाज बनकर, देश की धड़कन बनकर। And therefore we are collectively
The students of whole Rajasthan state, 1 crore students in one voice will be singing the patriotic songs to make the world record and to arouse the feeling of patriotism in our hearts. So, you can see the clock. It is going to be 10:15 and we are going to begin the singing of patriotic songs. St. Paul's, are you ready? You can raise the flag and tell me, are you ready? Okay, so here we begin the singing of patriotic songs led by our school choir group, and everyone is invited to sing loudly from the core of your hearts.
Ready for next anthem. Songs at the same time and concluding at 10:30. जोरदार तालियां एक बार फिर. Now I would like to request you to please sit down and relax. Please sit down. I request everyone to please sit down. I think the teachers have already inspected the ground and you can sit comfortably. The ground is not wet and we thank God for the beautiful weather. Beautiful weather, and we pray that in whole of Rajasthan the weather was very clear, and indeed this is a world record that we have made. All the students of Rajasthan, 1 crore students, they have made the world record of singing the patriotic songs, the same songs at the same time in different places, all the schools and different places in Rajasthan. आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। Now, dear students and teachers, we are privileged to have in our midst our chief guest, President and Chairman CDESU, His Excellency Right Reverend Dr. Dev Prasad Ganawa. We know him, he is a known personality in our midst, but a few things I would like to speak about him. First and foremost, he is the religious leader of the Diocese of Udaipur, Bishop Swamiji. He is the Bishop of the Diocese of Udaipur. Besides, he is a renowned scholar and educationist, and he has been an ardent student of his time, a writer, and most of all, what we have done today singing, he is a great singer also. A huge round of applause for His Excellency Right Reverend Dr. Dev Prasad Ganawa, the chief guest of today's program. And now, may we have the privilege of listening to him. May we invite him on stage, on the mic, to speak a few words of encouragement
and fill our hearts with patriotism for the occasion for which we have gathered here. Bishop Swamiji. आदरणीय प्रिंसिपल फादर जॉर्ज के मैनेजर फादर मास्टर डोरिया, फादर वनातू, सिस्टर रानी, स्टाफ एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है। जैसे कहा गया है कि यह मौसम इतना सुहाना है, ये भारत माता का मौसम है। हम भारत माता के प्रांगण में, भारत माता ने हमें यह ऐसा सुनहरा मौसम दिया है कि हम उसके प्रांगण में, उसकी स्तुति में, उसकी वंदना करें, उसके गीत गाएं। जैसे कहा गया है, सर ने बताया कि मैं गीत को मुझे बहुत शौक है। कल जब मैं सुन रहा था, आप लोग सब राष्ट्र गीत गा रहे थे, मैं पहली बार तो मैं सर को आके पूछा कि क्या हो रहा है, तो मैं वैसे भी आने वाला था गीत सुनने के लिए, आप लोगों के साथ गाने के लिए। राष्ट्र गीत गाने में विशेष जोश रहता है, विशेष उमंग होती है और विशेष उत्साह रहता है, क्योंकि इस उत्साह को और इस उमंग को हमें देने के लिए हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों ने बहुत परिश्रम किया है। उन्होंने अपनी जान कुर्बान दी, उन्होंने अपना खून बहाया हमारी स्वतंत्रता के लिए, जिसकी वजह से आज हम ऐसे वातावरण में बड़े आनंद और शांति के साथ बैठ करके उसका गुणगान कर सकते हैं। अभी हमने गाया, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कौन इससे जिसके रोंगटे खड़े नहीं हो जाते। हमारे राष्ट्र गीत इतने देशभक्ति से भरे हैं कि वह हमें कीड़ा के रख देते हैं, हमें हमारे कदम बढ़ाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जैसे आज पूरा राजस्थान में करीब, जैसे कहा गया, 1 लाख स्कूल और 1 करोड़ बच्चे, सभी ने मिल करके एक ताल और एक स्वर में इस भारत माँ के इस राष्ट्र गीतों को हमने पूरे राजस्थान में गुजा दिया। यह आवाज़ न सिर्फ यहाँ पर पूरे भारत में फैलेगी, तो जिसका जो देशभक्ति का जो हमारा जो प्रेम है, जो हमारी भक्ति है, जो चारों तरफ फैलेगी। हम कई बार ऐसे अमृत महोत्सव, विशेष करके अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तब हमें इस बात की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि जब कभी हम कोई उत्सव मनाते हैं या कोई शताब्दी मनाते हैं या कोई ऐसा पर्व मनाते हैं, तो वह पर्व न सिर्फ हम लोगों के लिए एक अनुष्ठान बनकर रह जाए, एक अनुष्ठान बनकर, एक रिचुअल बनकर नहीं रहना चाहिए, पर वह अनुष्ठान हमारे लिए वास्तव में आज एक आत्म परीक्षण का समय भी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम अपनी आजाद संवैधानिक मूल्यों और आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों के आदर्शों को पूरा करने में कितना कदम आगे बढ़ाए हैं, कितना सक्षम हम हुए हैं। हम कई बार संकल्प करते हैं, कई बार हम निर्णय लेते हैं, कई बार हम संकल्प करते हैं, किंतु छोटे से एक आग्रह पर, छोटे से एक डाइवर्शन पर, छोटे से एक डिविएशन पर हम उस आग्रह को या उस संकल्प को बहुत सहजता से भी तोड़ देते हैं। किंतु यह 75वां स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम इतने हर्षोल्लास के साथ में मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं,
ये हम आज ऐसा दृढ़ संकल्प करें कि हमारा हौसला हमेशा बुलंद रहे। और जैसे कहा गया है, माकला चतुर्वेदी ने कहा था, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर चीज चढ़ाने, जिस पथ पर जावे थे वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना, मेरे प्राण को ले लेना, मैं इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। उस कुर्बानी के साथ साथ में हमारे संविधान में जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, और हमारे महापुरुषों ने जिन आदर्शों के लिए इस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उन आदर्शों को भी हमें कामयाब करना। जैसे कहा गया कि हम होंगे कामयाब उन आदर्शों के अनुसार, अगर हम उन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने परिवार में अपनाएंगे, अपने स्कूल में अपनाएंगे, अपने राज्य में अपनाएंगे और अपने देश में जाएंगे। अब यह सब होगा तो हमारा झंडा भी ऊंचा रहेगा। आइए मैं समूह से आग्रह करता हूं कि हम सब इस स्वतंत्रता दिवस के पूर्व 12 अगस्त पर यह निर्णय लें कि अब से हम हमारे देश के लिए जिएंगे, हमारे देश के लिए मरेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you, His Excellency, Right Reverend Dr. Dev Prasad Ganawadi, for the inspiring message that you have given to us. And yes, it's a moment of introspection to celebrate Azadi ka Amrit Mahotsav. We have completed 75 years of independence, and it is time we introspect and carry on the message of patriotism, love for the country, for the coming generations as well. भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर लो ये शपथ, बनाएंगे भारत देश को और भी महान, भारत देश को और भी महान। And with this we conclude today's program, but not the जोश बने रहना चाहिए। How is the जोश? कुछ बच्चों का हाई लग रहा, बाकी नहीं लग रहा। Let me check again. How is the Jones? How is the Jones? Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! One day! ये आवाज जयपुर तक पहुंचनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री वहां पर है प्रोग्राम में, और उन्हें लगना चाहिए कि सेंट पॉल्स उदयपुर के बच्चों की आवाज उन तक पहुंच रही है। Well done, very well done. I express my heartfelt gratitude especially to His Excellency Bishop Swamiji for having spared his precious and valuable time and gave us an encouraging message to carry on in the days to come. I express my heartfelt gratitude to Reverend Father Manager, Reverend Father Principal, Reverend Father Vanathu, and Reverend Sister Ansi for their valuable presence and encouragement. I thank all the teachers, especially those who came up on the stage, leading the patriotic songs, making the children sing. Thanks to all the teachers for all the arrangements and for guiding the students. And most of all, my lovely children, thank you for the melodious voice with which you have sung the patriotic songs, and of course, you have made a history and become part of the history. Wish you all Azadi ka Amrit Mahotsav, and let us continue this celebration till 15th of August on the day
that we celebrate our independence and in the days to come. Once again, thank you and Jai Hind. I request our chief guest and the management committee to please proceed. Meanwhile, all the students will wait for the instructions to go to the classes. Please wait for the instructions. Thank you one, thank you all. A big round of applause, everyone. I request all the students, those who are holding the flags, to deposit the flags to the class teachers. All the students who are holding the flags and the balloons, kindly deposit the same to your class teachers and wait for the instructions of your class teachers. Only then you will be moving to your classes.